Hi everyone. Today's session is very important for all students who are struggling with their prelims examination and like सब कुछ करके देख लिया. You tried everything, like you are reading, you are working very hard, you are practicing a lot, maybe like in every possible way, right? And unfortunately आपका prelims नहीं हो रहा है. Right? Now, most of you, like इसमें से 80% are those students who are actually not working very hard and not practicing in a very right way. But overall, like if you considered both category, there is a big issue with the prelims examination. Okay? Problem है तो there is always a solution to it, but we have to understand the problem. Okay? Now, I really want to explain this to every student, like of all those students who are writing the prelims 26 examination, what exactly we are going and how we are trying to help you for the prelims 26 examination. Now, I believe that this prelims examination 26 cannot be only cleared with the help of test series. It's not possible कि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज कर रहे हो और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, और बिलो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. लाइक इवन इफ यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, देन ऑल्सो यू नीड टू डेवलप दिस अप्रोच फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, बिकॉज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी टफ एट एनी कॉस्ट. वो लाइट नहीं होंगे. ओके, दिस ईयर यू सॉ सम बेसिक क्वेश्चंस. डोंट एक्सपेक्ट नेक्स्ट ईयर इट्स गोइंग टू बी इजी एट ऑल. जो भी पोर्शन आपने इजी देखा है इज फॉर द करंट ईयर 25 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इट्स गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट एंड यू डोंट नो विच अप्रोच दे आर फॉलोइंग. Right? Nobody knows that. So why not we cover in a best possible way so that we can qualify this examination 26 and just get rid of it. Now, what exactly I mean here is that our course is divided into two parts. One is called the test series part, and other is other than the test series. Okay. Now, test series everyone is doing from different institutions and all. This is like I'm not going to discuss today, but what I really believe that other than test series is a very important factor for you. Now, few important things I would like to tell you here is that first thing I already told, that only test series is not going to help you. You have to be very comprehensive. बहुत तरीके से आपको different directions में with variations, with so much learning you have to improve. Second important thing I realize is question will lead to qualify, will help you to qualify. Now you are reading an article or you are reading the current affairs. अब आप क्या कर रहे हो कि एक करंट अफेयर्स आप रीड कर रहे हो, नेक्स्ट करंट अफेयर्स आया, नेक्स्ट करंट अफेयर्स आया. यू विल ओनली बी एबल टू कमांड ऑन द टॉपिक व्हेन यू सॉल्व अबाउट सपोज एमजी नरेगा और एमपी लैड स्कीम है और कोई भी स्कीम है, सपोज इंडो चाइना, एनीथिंग लाइक ट्रेड और एनीथिंग. अगर आप न्यूज पे न्यूज पढ़े जा रहे हो एंड यू आर नॉट सॉल्विंग द डेप्थ, दैट्स व्हाई यू सी हियर दिस ईयर एग्जामिनेशन द बिम्स्टेक क्वेश्चंस, राइट? They asked about the culture connectivity, right? Belongs to which country? And they told India, and that was totally wrong. India was not involved in this culture connectivity. No, it's not. वो डेप्थ में चले गए, राइट? बिम्स्टेक तो सबने पढ़ा था, बट वो जो लास्ट स्टेटमेंट था दैट वाज सो. इवन इफ योर बेसिक टॉपिक्स विल नॉट बी हेल्पिंग यू टू क्वालिफाई इफ यू आर नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉर द टॉपिक्स. द फर्स्ट थिंग. Second important thing is organic current affairs, and that's what I'm going to explain you. If you just stick to this video for the next 10 minutes, you will understand, right? Organic current affair is very why it is possible, why it is happening for you that the entire coaching centers are giving some materials, some coaching materials, but in the examination they are asking totally different thing. या तो वो उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं, और या आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, आपका R&D नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है प्रीलिम्स के एग्जाम को लेकर, राइट? एंड यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन कोचिंग सेंटर्स बिकॉज आपका ऑर्गेनिक करंट अफेयर्स इज मिसिंग. ओके,
and I'll teach you what you mean by the organic current affairs. Third is the no specific course. Okay, if you see any coaching center, this is what the Goaltide is different from everywhere. Any coaching center, the prelims के नाम पे what they are doing is they are giving you test series. Okay, or basic learning जो आप static पढ़ते हो and all such. But how the questions are framed, किस स्टेटमेंट्स को रॉन्ग करने होते हैं, कैसे, ये सारे के लिए आपको इंटेंस प्रैक्टिस की जरूरत होती है एक यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस के लिए. दैट इज टोटली मिसिंग. एक टेस्ट सीरीज रन कर दिया, स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, सॉल्व किया, फिनिश. इस तरीके से आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे. यू हैव टू बी टोटली डिफरेंट अप्रोच. यू हैव टू अडॉप्ट दैट फॉर योर 26 एग्जामिनेशन. Now, what exactly we are doing now, this is very, very important for you. Okay? हम क्या actually कर रहे हैं? Now, I will just give you that things we are covering. Now, you see here in the examination, 50%. This is a minimum I am taking is from your current affairs section. The rest is your static. Suppose minimum आप ले लो 50% अगर current affairs है आपका और static portion is a 50%. Now, this becomes very, very important. This is what will make you qualify the examination. अभी कट ऑफ 80, 85 लाके यू आर इन डिलेमा. इफ वी स्कोर 95, 100, 105, तो वाई नॉट वी शुड बी अप्रोचिंग दिस. और दिस कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन वी आर डीलिंग विथ करंट अफेयर्स इन अ वेरी वेरी ऑर्गेनिक वे. नाउ व्हाट वी डू, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज द ऑन द वीकली बेसिस is called the Abhas session. Now this is what do you mean by the Abhas session? Now let me take you to the Abhas session. Suppose this is the article which appeared in your newspaper. Again, this work is done by us. Yeah, articles, all this we will search and we will find. Now, what are the newspaper we are covering? The Hindu, the Indian Express, Hindustan Times, we have Business Standard, then we have Morning Standard, and then we have the PIB, the UN websites. These all are coverage while framing these things. Okay. Now what we are doing is we are just getting into the article, and we are not just giving you the article. We are giving you what all prelims questions can be framed from this article. Now this article talks about the Iran has ramped up the uranium enrichment, say the nuclear watchdog. ठीक है. अब the questions we have put here for you people in the Abhas session is, what is the approx percentage of U-225 and 238 in the natural uranium? What percent of uranium enrichment is required for the energy production and the weapon grade? Now, this statement looks very simple. And if you see in your prelims examination, in 22, I think they asked you this question and it like so many students did wrong. Now, very first statement says, India, despite having uranium deposit, depends on the coal for most of its electricity production. This is a very simple statement. Now, second statement says uranium enriched to the extent of 60% is required for the production of electricity. आज ये क्वेश्चन मिल गया, बट अगर ये नहीं भी होता, then also we have asked you this. Okay. Now, अब आप देखो यहाँ पे, if you see the answer, it says 3 to 5% of 225 and then 90% enrichment for the weapon grade. Okay. तो electricity के लिए we only need 3 to 5% and it is written here 60%. So this was incorrect. Okay. Now what we asked you apart from that, currently what is the status of nuclear in the total installed capacity? And the answer was this, and this is what the answer. Less than 2%. Then we asked you, is new and IABA has have right to ban on the enrichment of the uranium in both developed and developing countries? The answer was no, because IAEA does not ban, but it just may strict safeguard होता है इनका. ठीक है, ये बैन नहीं कर सकते बिकॉज 3 to 5% इलेक्ट्रिसिटी पे भी जा रहा है फॉर सिविलियन पर्पज, फॉर पीसफुल पर्पज. तो ये बैन नहीं है. तो आपने क्या किया, इस आर्टिकल के पीछे यू हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस and then you saw some nuclear facilities in Iran, what all the problems and all. This is what now uranium enrichment related to this topic is complete. You have solved the questions.
you have read the articles, and this is what they call the organic current affairs. I will give you another example. Now this is the second article. It says the first women who crossed NDA portals and daring 17 in the National Defense Academy, first batch of women. Right? Now, reading this article is not going to help. Now, when you solve the questions, yes, it says the National Defense Academy was formed after 1971 Indo-Pak War. True or false? Second question we have put in the Abhas session was the NDA was formed by the law passed by the parliament. And third, the idea of establishing the Joint Training Academy, this is the NDA, was conceived by a committee headed by. Now, they are the three very, very important questions for your prelims examination. Now, अगर सिर्फ आर्टिकल पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे नहीं हो. So, when you read article and when you solve side by side the questions, your current affairs become strong, your prelims become strong from day one. आपको day one से करना है. This is a weekly thing. It just take 1 hour per week, every week. If you just keep on solving the mains, optional, karo, that also is important. But I'm giving you 6.5 days per week for mains. Just 2-3 hours for your prelims every week. Why you are not able to understand this? अब आप देखो, again we gave the answers here. Now this was the article from the Business Standard. It talks about the India's critical mineral challenge. Simple. Now I asked the very first question that India does not have the reserve of critical minerals. We are importing 100% approx fully the critical minerals from different countries, mostly China. Now it says here India does not have the reserves. Now see in this article it says here India actually has plenty of reserves of some critical minerals that it imports, such as cobalt and rare earth metals, right? So in cobalt, so it's all written, the 5th largest reserve. So when we say here that India is importing 100% because India does not have reserve, this is the prelims question, but it is incorrect statement. India has reserve. पर इंडिया के पास क्या नहीं है? प्रोसेसिंग फैसिलिटीज नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम. हमारे पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है, रिजर्व है हमारे पास. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, यूसेज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लीन एनर्जीज. नाउ दिस इज इजी वन, यू विल से ऑल आर करेक्ट हियर, बट द अनदर पॉइंट हियर इज कौन सा मटेरियल्स यूजफुल है विंड एनर्जी में, कौन सा मटेरियल यूजफुल है सोलर एनर्जी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में. यू हैव टू नो दिस, यू हैव टू नो दिस. दैट इज व्हाट कॉल्ड द डेप्थ ऑफ द लर्निंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. समझ में आया? अब आपसे देखो, एक आपने ये आर्टिकल पढ़ लिया, द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर. दिस अपीयर्ड द हिंदू न्यूज़पेपर, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन. ओके, नाउ दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू. अब यू गॉट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ओके, आपको आंसर्स यहां दिख रहे हैं, पर इफ यू जस्ट सी द क्वेश्चन हियर, दिस विल मेक यू स्ट्रांग. Election to the post of deputy speaker to be held on such date as speaker may fix true or false. So I am taking this Abhas session in the form of true and false because only 1, only 2 इससे solve हो जाएगा आपसे statement. Tough statements future में publish हो, कोई भी हो, true false हो, कोई भी pattern दे. If you know the statement, if you know the answer, it's fine. ठीक है. तो आप सेकंड स्टेटमेंट देखो, एज पर द रूल्स ऑफ द हाउस द पोस्ट ऑफ द डिप्यूटी स्पीकर गोज टू अपोजिशन. नो, इनकरेक्ट है, राइट. दिस इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट. स्पीकर इज फिक्सिंग, राइट. बट अगेन द टर्म एज सुन एज मे बी डेप्यूटी स्पीकर, इफ यू जस्ट इफ आई गिव द ब्रीफ आइडिया, डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट बीन अपॉइंटेड इन द लोकसभा इन द. So because why it's not appointing, because in the article it is written as soon as may be he should be appointed. You see here, as soon as may be. So I just ask you that whether this term is used by speaker also or not. Another prelims question एग्जाम में आ सकता है आपसे, क्या ये स्पीकर के लिए होता है? क्योंकि स्पीकर को तो हम टाइमली अपॉइंट कर रहे हैं ना. टू कंफ्यूज यू इट विल से द बोथ टर्म्स. देन आंसर अगेन यू विल सी करेक्ट. यस, इफ यू सी हियर इट इज यूज्ड फॉर बोथ द पर्सन. तो आपने यहां क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? टू कंक्लूड, आप क्या कर रहे हो यहां पे? हम आर्टिकल्स के साथ साथ हम करंट अफेयर्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डे 1 से कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन जो आप फरवरी और मार्च में स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, यू वोंट गेट टाइम टू रिवाइज, यू वोंट गेट टाइम टू प्रैक्टिस,
और आप इस एग्जाम को बिना अधूरे प्रिपरेशन के साथ यू विल गो टू राइट नो, नीदर यू गॉट टाइम टू रिवीजन, नीदर यू गॉट टू सॉल्व द एडवांस क्वेश्चंस. और ऐसे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? इट्स अ डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन, राइट, पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, है ना. Similarly, we have other articles as see. This is taken for the business standard again. Data economics. See here that 25 fiscal year we have 4 statements and I have asked. So ये एक अभ्यास. This is what called the अभ्यास. Now we don't stop here. We don't stop here. What we do more? Now apart from this अभ्यास session where we call you all for on the Google Meet and we solve this. The question answer session, you have to write the answer in A4 sheet. This is what I do with you. Now another sheet I give you, that is called the practice sheet weekly basis. Again, this is what we are doing. Again, the organic current affairs, different articles, not the same as we are doing in the Abhas. They are the different articles, and again we have given you the questions, prelims questions to practice. ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग होगा और यू विल बी एबल टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक. Again, you see here it says the outward remittance under the LRS fell 6.8%. Now there are so many questions you see here. Liberal scheme was introduced in which year? There's a limit to this. तो आप ये जो करंट अफेयर्स में पढ़ते हो, we are giving you in the question form. अब ये ज्यादा बेटर है, ये लर्न करना ज्यादा बेटर, बिकॉज हियर यू विल डू रॉन्ग एंड देन यू विल लर्न, देन यू विल सी द आंसर. क्या आंसर इसका? एंड आंसर्स तो आई विल गिव यू, बट फिर आप लर्न करने, फिर यू विल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट व्हेन यू डू सम मिस्टेक, राइट. ये एक यूनिक तरीका है. दिस इज व्हाट द टेस्ट सीरीज, अदर देन टेस्ट सीरीज थिंग्स वी आर डूइंग इन आवर प्रीलिम्स कोर्स. और ये वीकली बेसिस पे होता है. नाउ सिमिलरली वी गिव यू आर्टिकल, सी ब्यूटीफुल आर्टिकल, हाउ एफटीए विन विथ यूएस. नाउ सी द आर्टिकल्स. कितने, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नहीं आप बताओ मुझे. इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इज मोर देन एग्रीकल्चर इंपोर्ट. इंपोर्ट ज्यादा करता है या एक्सपोर्ट ज्यादा करता है? इजी है, पर एग्जाम में आप फंस जाओगे यहां पे. द नंबर 1 एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन से कॉमोडिटी को करते हैं? आंसर है आपके सामने, ठीक है. आंसर आपके सामने, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मरीन प्रोडक्ट्स. नाउ लास्ट सी, इंडियन मरीन एक्सपोर्ट इज लार्जली टू विच कंट्री? अगेन आप इसमें जाओगे, यू सी यूएस. सो व्हेन द स्टेटमेंट 1 विल कम, इंडिया हैज ट्रेड डेफिसिट विथ यूएस, एंड स्टेटमेंट 2, इंडिया मेजरली एक्सपोर्ट द मरीन टू चाइना और अदर कंट्री. तो ऐसे स्टेटमेंट जब होते हैं तो मोस्टली 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट. तो आपका अगर फैक्चुअल नॉलेज स्ट्रांग होगा तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. एंड दिस इज व्हाट द ऑर्गेनिक लर्निंग ऑफ द करंट अफेयर्स इज. आप मैगजीन पे मैगजीन पढ़े जाते हो, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने में लैग करते हो और फिर आप फेल हो जाते हो. तो दिस इज व्हाट, अदर देन टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज, वेयर ऑल द बेसिक्स, the full length test, subject specific test, current affairs, this also is a super test series, very important test series. Every question will be important, and this is what will make you very perfect in the current affairs. Even the static news which will come, newspaper only will cover. So whether the news is related to the static or the basic crude current affair, we are going to cover both. Okay, so this is all about our course, and I just gave you the rough idea. You can go to the link on the website and search for the course. But yes, we are going to deal with the prelims in a very, very unique and beautiful approach. That's why lot of students you see on the Goaltide, we are qualifying the prelims in the very first attempt on the Goaltide. Okay, so just this is what I want to make you understand. There's a confusion also among the students, so I just try to clear it out. And if you have any query, let me know. Okay, my number is on the website. Okay, this is the personal number. You can WhatsApp me here. Okay, and I'll answer all your queries. Thank you so much, and join as soon as possible and start learning for 26. At any cost, we should be clearing prelims exam. सब minimum ये करना ही करना है. Mains और इसमें फंस जाओ, पर prelims is what? फंसने का मतलब I want to say कि prelims नहीं होगा तो motivation is zero है ना. इसमें फेल होता है तो फिर भी यू गेट सम करेज. ओके, प्रीलिम्स हो गया है, एक और एफर्ट लगाते हैं. बट प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो फिर क्या करोगे?
ओके, थैंक यू सो मच। आई सी यू इफ यू ज्वाइन एंड स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा, इट्स नॉट ए वन वे गेम। थैंक यू सो मच।